Modern manufacturing, 504 CNC programming. I think this is last revision what I am doing here, and complex curve geometries in 2D and 3D were extremely expensive by mechanical means, which usually would require complex jigs to control the cutter motions, machining, and this machine complete with repeatable accuracy and unmachined operations. Now these are the advantages we can see here: easier to program, easy storage of existing program, easy to change, avoid human errors, safer to operate, complex geometries produced as cheaply as simple ones, and usually generates closer tolerances that manual machines. So these are the advantages of CNC machining, CNC programming. Okay. Number one is we can produce complex curve geometries in 2D, 3D. Then usually or expensive or mechanical means usually we require complex jigs to control the cutter. Machining components with repeatable accuracy and unmanned machining operation. These are the three things which we can do it by CNC machines. Major advantages ये होते हैं कि complex machines को अपन बना सकते हैं, complex geometries को. Now, easier to program, easy storage of existing programs, easy to change the program, avoid human errors. These are other applications for CNC machines. We can easily change geometries or directions. Now, this is a vertical milling machine architecture. You can see here, this is a normal milling machine. Here, this is a work table. The work table moving. This is work table. This is head. This is tool. This is the workpiece. You can see here. This is the workpiece on which machining is been done. This is saddle where the direction is given. This is knee, T-slot. These are normally vertical milling machine. Okay, now it is based on the types of motions like point-to-point motion, continuous path motion, open loop or closed loop, based on power supply, electric or hydraulic or pneumatic. On these things it depends, and based on position system, incremental or absolute systems. So these are the types of machines which is available. Now the other one is basics CNC machining principle. These are the basic principle in which we can direct the machine to perform this XYZ directions. Using a vertical mill machining center as an example, there are typically 3 linear axes of motion. Each is given an alphabetic designation or address. The machine table motion side to side is called x-axis. The table movement in and out is y-axis, while head movement up and down the column is z-axis. These are x, y, and z axis. You can see that this is x, this one is y, and this one is z axis. And this is a manual table. There is one controller, this control unit, which gives commands where to move, and so on and so forth. Okay. Now basic CNC principles में इनके अंदर x, y, z axis के ऊपर follow किया जा सकता है. Coordinate system जैसा कि आप जानते हैं, Fleming's Criterion rule, x, y, and z axis we follow. Now,
Sorry, the basic CNC principle, a computer controlled machine are able to accurately and repeatedly control motion in various directions. Each of these directions of motion is called an axis, depending on the they are covering 2 or 5 axes. Additionally, a CNC axis may be either a linear axis in which movement is in a straight line, or a rotary axis with a motion following a circular path. Okay, you can follow this path. Now, basic CNC principle: if a rotary table is added to the machine table, then the fourth axis is designated B axis. This is a rotary table अगर आपने ऐड कर दी इसके अंदर, तो ये जो फोर्थ एक्सिस आ रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस तो है ही, दिख ही रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक फोर्थ एक्सिस हो जाएगा पी, अगर रोटरी मूवमेंट कर दिया अगर आपने तो ये सीएनसी के अंदर ये अपन एक एडिशन मूवमेंट कर सकते हैं, ये कंट्रोलर लगा रही है, कंट्रोल कमांड देता रहेगा इसको. Now, G code, M code is the important things which we consider here. These are number, values, and coordinate system. Each number of code is assigned to a particular operation typed individually carried by machine operators. The M code are automatically generated by computer software. तो जी कोड एम कोड के फंक्शंस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ. Features of CNC machinery में the tools of material moves. The tool can operate in 1 to 5 axes. Larger machines have a machine control unit which manages operations. Movement is controlled by motors, actuators. Feedback is provided by sensors, transducers. Tool machines are used to change tools automatically. अब मेनली ये टूल्स होते हैं हाई स्पीड टूल्स से बने होते हैं. कार्बाइड टूल्स हो गए. टूल्स आर डिजाइन टू डायरेक्ट वेस्ट away from the material. Some tools need coolant such as oil to protect the tools in the work. Okay. Now tool paths, cutting and plotting. अब इनकी कटिंग प्लॉटिंग करते हैं, स्पीड आपको देना पड़ेगा इसके अंदर आरपीएम में, और कटिंग टूल्स कैसे करेंगे. देन मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट कटिंग और कंटूरिंग. फीड एंड स्पीड्स आर डिटरमाइंड बाय कटिंग डेप्थ, मटेरियल एंड क्वालिटी ऑफ फिनिश needed. Harder materials need slower feeds and speeds. Roughing cuts to move larger amounts of material than finishing cuts. Rapid traversing is required. So these are things जो कि आपको टूल्स के अंदर देखना पड़ते हैं आपको. Now manual. This is manual NC programming. जो मैनुअल करते हैं उसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम स्पेसिफाई करना पड़ेगा. Tools should be loaded on the machine spindle. What are the cutting conditions? Speed, feed, coolant, start point and end point of motion segment, how to move, और ये so on and so forth. ओके. अब आप ये प्रोग्राम देखिए, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर अगर आप ये देखोगे तो ये एक मशीन है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट है, ये उन्होंने उसका नाम दे दिया है. ईच लाइन के प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक होता है. ईच ब्लॉक में कंपेयर सेवरल इंस्ट्रक्शंस. ये सीक्वेंस है फॉर्मेट ऑफ वर्ड्स. N3 हो गया तो ये सीक्वेंस हो गया. G2 हो गया, X 1.4, Y 1.4, Z 1.4. तो XY के ऊपर XYZ के ऊपर इतना मूव होना है 1.4. फिर IJK में ऐसा होना हो ऊपर साइड और ऐसा मूव होना है. एफ क्या, फीड रेट इतनी हो गई, स्पिंडल स्पीड इतनी हो गई, टूल T4 यूज करना, so and so forth things goes on and other functions है. ठीक है. तो जी कोड का क्या हुआ, फंक्शन प्राइमरी फंक्शन होता है. एम कोड का होता है दूसरे फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं वो कंटेन करना है. तो ये ऐसे जी कोड और एम कोड डिजाइन कर सकते हैं अपन. जैसे पूरा प्रोग्राम है, एक्स एक्सिस में इस पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक जाना है आपको, तो ये ऐसा मूव हो जाएगा. So and so forth. ये आप देख सकते हो, जैसे ये है, देखो आप इसके अंदर मोशन P0, तो यहाँ पे है P1, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ऑपरेट किया, P1 P2 P3 तक आया, P3 से P4, ये सब पॉइंट्स चल रहे हैं, P5 एंड देन बैक. तो ये ऐसा सॉर्ट कर दिया जाएगा आपका. टूल साइज 0.25, फीड रेट, कटिंग स्पीड, ये सब आपको डायमेंशन देना पड़ेगा. और ये पॉइंट्स बताना पड़ेंगे कौन कौन से. 4 पे अगर 4 से ये क्या होगा, 4 5 हो जाएगा ये आपका. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 9 9 4 हो जाएगा, ये 9 5 हो जाएगा. और देन वापस ऐसे ही है मूवमेंट होता रहेगा.
ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग देखो आप, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाएगी N010 G70 G90 यूजर फील्ड कोऑर्डिनेट्स फीड इन G90 फॉर फीड हो जाएगा ना IPM। ओके, so on and so forth। ये पूरे प्रोग्रामिंग ऐसा होगा, पूरा इसके अंदर आप देखोगे तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर ऐसे कट होता जाएगा। If you go through it properly, you will see that this is the programming, how it has been done। target coordinates ये हो गए आपके, यहाँ कहीं होगा target coordinates। This is how circle is been drawn। You can see here, यहाँ पर आ गए N050 एनकोडेड मीन्स आपने जो टूल लिया G01, ये यूं सर्कुलर के अंदर यूं टर्न हो गया आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 to 9 के बीच में एक्स वाई एक्सेस होगा। ओके, so this is how we programming, linear interpretation is going on। Now basic instructions are called part program commands। When running a part program is interpreted one command line at a time until all lines are completed। Commands, which are also referred to as block, are made up of words with each begin with the letter address। ठीक है, now change the program basic। G code, M code, address is the most common। Now this is coordinate system। Absolute positioning, coordinate XYZ, RX, RY, RZ, feed rate and sprint speed, coolant control, on and off, so on and so forth। This is primary code, G code। Initial machining setup and establishing operating condition। N code specify program line number to execute by MCU, used to specific motion of slide direction। Now these are program number, sequence number, preparative function, x-axis, y-axis, z-axis, radius designation, period designation, speed, tool। These are the key letters which is being used here, or you can take a snapshot of all it। And this is how preparatory code, common G codes which is being used here। You can see at G is the preparatory code to control final position of the tool and not concerned with the path that is followed in arriving at the final destination, G02। You can see how G code is being designated in this manner, everyone can see it। And this is M code, program stop, options of program, program end, spindle clockwise, so on and so forth, glance। So we have till that here, you can have a brief idea of a G code। What is G code? This is M code and this is G code। These are the functions in which we use this G code and M code। Okay, so for today